So we'll provide you this recording of the complete class. Every day class recording you'll get. Okay. So let's start. Let me show my screen. I am audible to everyone, right? Yes, Tanya, Yes, you're on. ma'am. Yeah, Okay. Tanya. So let me share my screen. Okay. So we can start the class. So welcome you all for the Azure Data Engineering classes. And I'll be your trainer. So let me first introduce myself. I'm Tanya Jaggi, and I have worked with Practo, Misho, Amazon, all such companies, and I have more than 10 years of experience working in a corporate. And right now, I'm working as an Azure Data Engineer Manager. So I used to work as an individual contributor also in the project, and I'll manage the team. Side by side, I'll take the interviews as well. तो जब हम आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन कराएंगे सो आई नो हाउ द स्ट्रक्चर गोज इंटरव्यू कैसे होता है कैसे कंडक्ट किया जाता है क्या क्वेश्चंस पूछते हैं व्हाट आर द राउंड्स वी हैव what we actually look for in a candidate when it comes to Azure data engineering, right? So all that will provide you with, right? So first of all, I want everyone to introduce yourselves. Let it be a introductive class. One by one, every one of you can introduce yourself. And if you are comfortable, you can turn on your cameras as well. Viplav, we can start from you. I think Vikas wants to speak first. Yeah, okay. Vikas, we can go ahead with you. Okay, I'll start first then. Mhm. Hi everyone. My name is Viplav Bande, and I have total 4.8 years of experience in data analytics. So currently, I'm working with GeoHaptic, and this company Okay. specializes in basically creating chatbots using conversational AI and a little bit of generative AI as well. So I've been working at Haptic for around 2.9 years, and I've been, developing and deploying different chatbots for various clients like Indian School of Business, Paytm, then there is PVR Cinemas, and a lot of clients for which I've worked with. Before joining Haptic, I was actually, working with Deloitte Consulting. So there I was working a little bit with machine learning. Then I was also working with different managers of different departments to, collect different reports and do the data collection and data manipulation part as well. And we have also, created a framework in NLP using different machine learning algorithms as well. So right now I'm, looking to switch because I think my progress in my current company is limited. So I'm looking forward to, learn Azure data engineering and, create a better career graph for myself in the future. Thank you. You have taken the right decision at the right time, Viplav. Yeah, Tanya. So basically, I'm, looking to learn these services which is provided by Azure. Mm-hmm. And I think in 2024, there's going to be a lot of demand for Azure in the market. Correct. So I think, being updated with the latest tech is the new agenda nowadays. So it's really Correct. necessary to learn new technologies. Mm-hmm. So Azure, it's like a boom in market, and as we have already discussed in the webinar, that the demand and supply of Azure data engineering is very different. So demand, it's on like if there are 100 jobs opening, there are only 15 to 20 people, Yeah, right? yeah, right, right, right. So the demand is very high, but the supply is very low, and it's the right time. हिंदी में Hmm. कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार लेना चाहिए, राइट? तो Correct, correct, अभी अजोर डेटा इंजीनियरिंग का लोहा गर्म है. correct, correct. एक्चुअली एक जमाने में ना 2-3 साल पहले ये सेम टू सेम सिनेरियो डेटा साइंटिस्ट का था.
Correct. But now the demand of data scientists is so much key Mm-hmm. for 100 positions, 200 people are applying. Correct. Correct. But it is reverse for data engineering. So I think it Engineering. is better to learn data engineering now. राइट क्योंकि डेटा साइंस अब कॉलेजेस में भी कॉलेज कोर्सेज में भी इंक्लूड हो गया है राइट Right, सो right. द Yeah, कॉलेज स्टूडेंट्स आर आल्सो अवेयर ऑफ व्हाट इज डेटा साइंस correct, correct. so who wants to go next Kaushal Yes, 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 Tanya. Basically, myself, Kushal Paliwal, and I have like 1 year experience in and like manual testing. In manual testing, I work on the different like projects like telecom based projects. So in this telecom based project, we have like work on the mediation projects, okay and uh, and for skilling myself, that's why I'm joined to like this Azure data engineering. Join to H. good Hello. yeah Kaushal Yes, that is my. nice Rajat Uh, Hi, good evening. My name is Rajat, and I'm from non-IT background. And basically, I don't have any much experience in these data scientist or data analyst job, but yeah, I have a 2 month experience in the debt collector I worked in. So yeah, I'm a fresher. So this is a pretty new domain for me. no problem Rajat as we have already discussed that we are going to teach you from scratch everything that is required like तो हमारे जितने भी trainers हैं they are going to teach you from scratch and they are going to uh, मीन ट्रीट यू लाइक फ्रेशर्स ओनली राइट ताकि आपको वो एक एक चीज डिटेल में और अच्छे से समझा पाए है Yes, ना सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट यू आर एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम राइट yes. सो कैन वी मूव टू विकास आर यू अवेलेबल Yeah, hi, Tanya. Hello, everyone. With us this side. So, first of all, I would, like to bid good evening to everyone, and thank you to Tanya and Ashutosh for letting me in for this lovely course. So, I have in total around 13 to 14 years of experience in the industry, and most of it has been in the telecom sector. But past 5 to 6 years, I have been into IT sector as well, specifically working as automation business analyst covering the process automation areas, that is the RPA bots, in case you have heard it before. However, working as an automation business consultant, apart from the usual business analyst, my role is to give a consulting view to the clients, right? What is happening in the market today, what are the available technologies and tools. And in this regard, I come across data engineering as one of the beautiful course which I can pursue to bring some feathers to my course or my career, so that it can help me delve into uh, uh, what shall I say, right? The projects with respect to data, right? Because now the demand is more as with respect to big data and other areas where data engineering can help. So that is why I chose this course, and I'm pretty much excited that I would be moving on to this journey with all of you. Yeah, welcome, Vikas. So we would like to tell that Vikas is also our ex-student. So as we have modified our course and added new topics which will help Vikas, so it inclined Vikas to learn more. Congratulations, Vikas, for choosing us again. So thank you, Ashutosh. Looking forward. Yeah. yeah thank you everyone Ashutosh if you have also joined I would like you also to introduce yourself please So hi everyone. As I haven't, some of you guys might know that I have overall 7+ years of experience. So I started my journey as a non-IT into non-IT, but later the big data word buzz was there. So I was very much inclined, and also I did my major in big data analytics. So which helped me get placed from the college, but it was somewhat non-IT. But later I moved to Bangalore and started learning about data science and everything. So I have also worked more than 4 years into data science. Then I
looking at the trend, I shifted to big data, Azure data engineering, and now like I'm in front of yourself with like recently managing a team of more than 10 people into Azure, and also working with WNS Global. It's an Indian MNC in Gurgaon. So that's it, guys. Thank you. Thank It's Ankur is also there. If Ankur can help us with his uh, details. Thank you. Hello everyone, myself Ankur here. I am working with a small startup in Chandigarh area. I am working as a service delivery specialist. I am having experience of around 9 years in this industry. I have been working into infrastructure unit since my beginning. I have been managing the teams of 8 to 10 people right now, but as it's the demand of the time and technology to move into cloud and some data types, so I am here to learn that new technology. Thank you. Yeah, welcome, Ankur. I can see we have Bharat also with us. So, Bharat, would you like to introduce yourself? Yeah, good evening, ma'am. Yeah, good evening. Ma'am, my name is Bharat, and I have done my BCA, and I have been working as a back office executive in stock market company right now. So I have Okay. decided to now time to switch from non-IT to IT. That's why I have choose as your data engineer. Yeah, right. So, as I said earlier, that it's the right time and right choice which you people have taken. So, before proceeding with the classes, I just want to know that I'm planning to take the classes in mixed of Hindi and English language. Is everybody comfortable with it? Or you want me to switch either in English or either in Hindi? Yeah, mixture of both are fine. Okay, fine. For everyone, it's fine, right? Yes, yes. Okay, sure. So let me proceed with today's classes. So once again, welcome you all. Yeah. So first of all, डेटा इंजीनियरिंग से पहले हम ये जानते हैं कि डेटा क्या होता है, राइट? डेटा इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट ही क्यों आई मार्केट में? तो कोई भी आप डेटा ले लो, मतलब आप कहीं पे अपनी फोटोज अपलोड कर रहे हो, आप फेसबुक में अपना अकाउंट बनाते हो, इंस्टा में अपना अकाउंट बनाते हो, राइट? आपने व्हाट्सएप पे अपना कुछ डेटा डाला हुआ है, आपने फोटोज डाली है, वीडियोज डाली है, ये सब क्या है? ये एक डेटा है, राइट? और ये डेटा जो है वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है, इसको मैनेज करना पड़ता है ना? तो इस सब चीजों के लिए कौन मैनेज करेगा? तो इसके लिए इंजीनियर्स चाहिए, राइट? और डेटा जो होता है वो जरूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक फॉर्म में हो, है ना? डेटा आपको ऑर्गेनाइज भी हो सकता है, आपका अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है, क्लटर्ड भी हो सकता है, नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, किसी भी तरीके का डेटा आपको मिल सकता है ना? तो इन डेटास को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन में डालना, उससे एक इंसाइट क्रिएट करना, और उस इंसाइट से बिजनेस की वैल्यू को इंक्रीज करना, राइट? ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं हमारे डेटा इंजीनियर्स, राइट? सो लेट्स मूव की अजोर डेटा इंजीनियरिंग क्या है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा को मैनेज करने के लिए इंजीनियर्स लगते हैं। अजोर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। अभी मार्केट में बेसिकली 3 क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे ज्यादा काम होता है। एक है आपका AWS, जो है आपका अमेजोन वेब सर्वर, ये अमेजोन की तरफ से है। फिर है आपका माइक्रोसॉफ्ट अजोर, जिसमें हम काम करने वाले हैं या हम जो सीखने वाले हैं, राइट? एंड दूसरा है तीसरा है का गूगल प्लेटफॉर्म, राइट? गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, GCP जिसको हम बोलते हैं। तो अज्योर डेटा इंजीनियरिंग में बेसिकली आप क्या करोगे एज अ डेटा इंजीनियर? तो जितना भी क्लटर्ड डेटा है, राइट, उसको आप कोलैबोरेट करोगे, उसको एक मीनिंगफुल इंसाइट में डालोगे। उसके लिए हमको कुछ पाइपलाइंस क्रिएट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स लगते हैं, और वो सारे टूल्स हम इसमें सीखेंगे, राइट? उसके लिए हमें क्वेरी लैंग्वेज लगती है जिसको हम सीक्वल कहते हैं, राइट? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। देन हमें कुछ दूसरी कोडिंग लैंग्वेज लगती है, लाइक हम इसमें पाइथन यूज करने वाले हैं, क्योंकि आगे हमें पाई, स्पार्क, स्पार्क सीक्वल, ये सारा कुछ अज़ोर में लगता है, राइट? तो इसलिए हम
सीक्वल भी पढ़ेंगे, हम पाइथन भी पढ़ेंगे, और अजोर के भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको हमें पढ़ना है, राइट। तो बेसिकली आपका काम यही होगा कि डिफरेंट सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करना, उसको एक जगह पे मीनिंगफुल इंसाइट्स में कन्वर्ट करना, राइट। सो इसको मैं एक बार आपको रीड भी कर देती हूँ। अजोर डेटा इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग डेटा सॉल्यूशंस ऑन माइक्रोसॉफ्ट अजोर, राइट। जैसे मैंने आपको बोला कि माइक्रोसॉफ्ट अजोर प्लेटफॉर्म में ये सारा होता है। challenges effectively sorting, processing and analyzing large volume of data। तो क्या challenges होता है कि कोई भी जो हमें डेटा मिला है, राइट, उससे हम किस इफेक्टिव वे में हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एक एग्जाम्पल दूं तो हम फ्लिपकार्ट की सेल्स उठा लेते हैं, ठीक है। तो जब कोई फ्लिपकार्ट की सेल्स आती है तो उसमें कोई भी जब सेल लगती है, किसी भी एक प्रोडक्ट में सेल लगती है, तो वो सेल कितने परसेंट की लगनी चाहिए, राइट। उसको उससे पहले उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, या उसका एक कॉम्बो क्रिएट होना चाहिए, उसकी प्राइसिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, उसमें डिस्काउंट पॉइंट क्या होना चाहिए। ये सारा क्या होता है, ये डेटाज होते हैं जिनको हम एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम उससे इनपुट देते हैं बिजनेस को कि ठीक है, इस प्रोडक्ट में इतना अगर आप डिस्काउंट डालोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस मच अमाउंट ऑफ सेल्स, राइट। तो इस तरीके से हम डेटा को एनालाइज करते हैं और उससे रिजल्ट क्रिएट करते हैं, राइट। सॉल्यूशंस इज कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ टूल्स एंड सर्विसेज इन अजोर। तो मैंने जैसे बताया कि इसमें काफी सारे हमें टूल्स यूज करने पड़ेंगे जो अजोर के खुद के टूल्स हैं। ऑब्जेक्टिव, बिल्ड रोबोस्ट डेटा पाइपलाइन, इम्प्लीमेंट डेटा इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स वर्कफ्लो। तो इसमें हम ETL पाइपलाइंस क्रिएट करते हैं। ETL मींस एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ये जब हम आगे पढ़ेंगे पूरा कोर्स तो इसमें मैं आपको पूरा एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ। फिर इसका बेनिफिट्स क्या है, ड्राइव मीनिंगफुल इंसाइट्स, ड्राइव बिजनेस डिसीजन, राइट। तो जब एक मीनिंगफुल इंसाइट मिलेगा तो उससे जो डिसीजन मेकर्स हैं, है ना, उनको डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलती है कि चलो ठीक है, अगर ये डिसीजन या ये डेटा है हमारे पास, है ना, तो इससे हमें क्या डिसीजन लेना है। अगर कोई एक कंपनी है जिनको अपनी कोई एक ब्रांच खोलनी है ना, अभी उनकी ब्रांच मान लो दिल्ली में है, वो सोच रहे हैं हम नोएडा में ब्रांच खोलें या नहीं खोलें, तो वो एक सर्वे रोल आउट करेंगे, वो सर्वे का डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उससे इंसाइट्स निकालेंगे एंड अकॉर्डिंगली दे विल टेक डिसीजन कि वेदर टू ओपन देयर ब्रांच इन नोएडा और नॉट, राइट। सो दैट इज वी कॉल्ड अ बिजनेस डिसीजन। capabilities leverage advanced analytics and machine learning, focus addressing the exponential growth of data in today's digital world, like। तो जैसे हम सबको पता है कि आज का जो वर्ल्ड है इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड, राइट। एंड डिजिटल वर्ल्ड में डेटा बहुत है, बहुत डेटा, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ अज़ूर डेटा इंजीनियर्स। तो सबसे पहले अज़ूर डेटा इंजीनियर्स आते हैं, वो सारे डेटा को वैलिडेट करते हैं, उसको एक मीनिंगफुल इंसाइट्स में क्रिएट करते हैं, उसका एक लॉजिक क्रिएट करते हैं, एंड देन दे पास इट आउट टू द डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, राइट। So that's why if in company you can find कि अगर 4 डेटा साइंटिस्ट हैं तो 10 से 15 डेटा इंजीनियर्स होंगे, क्योंकि डेटा बहुत ही लार्ज वॉल्यूम में क्रिएट होता है, और बहुत लार्ज वॉल्यूम का डेटा मैनेज करने के लिए जाहिर सी बात है बंदे भी बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, राइट। सो एम आई क्लियर टिल हियर एवरीवन? Yes, Yes, yes. yes. Yes, yes. Yes, yes. Yeah. Fine. So we'll move further, or you want me to explain few more, any point more? Go ahead. Sure. So let's go ahead. Thank you, Ankur. या तो इस कोर्स का क्या रोड मैप होगा, हम आपको इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आपको सीक्वल पढ़ाएंगे। तो कल से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी वो हम सीक्वल से स्टार्ट करेंगे। देन विल गो विथ पाइथन। तो पाइथन आपका एक कोडिंग लैंग्वेज है, हम उस पे जाएंगे। देन विल गो विथ अज्योर। अज्योर के जितने टूल्स हैं लाइक अज्योर डेटा लेक, अज्योर डेटा ब्रिक्स, अज्योर डेटा फैक्ट्री,
तो सबकी अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं अजोर में, अपनी डिफरेंट वर्किंग्स हैं. दे ऑल आर मीन्स इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, राइट. तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताएंगे. देन वी हैव स्पार्क, जिसमें आपका सीक्वल और पाइथन का मिक्सचर होता है, हम आपको वो भी पढ़ाएंगे. एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू गिव यू एन हैंड्स ऑन ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट, ताकि आप वो अपने रेज्यूम में मेंशन कर सकें. एंड वेन एवर यू गो फॉर एनी इंटरव्यू, दे विल फर्स्ट टेल यू टू, पहला क्वेश्चन क्या होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, राइट. तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आप क्या बताते हो, मेनली आप अपना काम बताते हो कि हमने पुराना क्या काम किया है. तो उसमें आपको अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है. उस प्रोजेक्ट को आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि जो भी इंटरव्यूअर हो वो उसको लगे कि हाँ यू हैव डन समथिंग, एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट ओनली दे आस्क यू द क्वेश्चंस, राइट. सो इट्स अ ट्रिक दैट हाउ यू कैन ड्राइव योर इंटरव्यू. तो डोंट वरी, हम आपको वो भी ट्रिक सिखाएंगे फॉर श्योर, राइट. सो लेट मी मूव एंड लेट मी टेल यू इन डिटेल्स कि हम क्या कोर्स में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं. तो as I said कि we'll start with SQL, then we'll go with Python. Then we have a few tools of Azure, that is Azure Data Lake, Azure Databricks, Azure SQL Database, Azure Data Factory. Then we have Spark. In Spark only we have PySpark and Spark SQL. Then we have Azure Key Vaults. तो की वॉल्ट बेसिकली जो होती है वो प्राइवेसी पॉलिसीज के अंडर आती हैं, है ना. अगर हम कोई भी डेटा शेयर कर रहे हैं या क्लाइंट हमारे साथ डेटा शेयर कर रहा है, तो वो जाहिर सी बात है चाहेगा कि उसका डेटा सिक्योर्ड रहे. तो अजोर की वॉल्ट जो होती है वो एक सिक्योरिटी पर्पस पे है. इसको हम डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे. देन अजोर लॉजिक एप्स, अगर हमें कुछ भी पाइपलाइन क्रिएट करनी है या कुछ भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमें कोई एक लॉजिक लगाना पड़ता है, उसके लिए होता है. देन वी हैव अजोर डेवऑप्स, इसमें डेवलपमेंट का काम होता है, सिक्योरिटी पर्पस पे ये भी काम आता है. देन वी हैव अजोर सिनैप्स, सिनैप्स इज आल्सो अ टूल of Azure, that we have industry standard real time end to end projects. जैसे मैंने आपको बताया कि हम आपको पूरा end to end प्रोजेक्ट सिखाएंगे कि जब भी एक क्लाइंट ऑन बोर्ड होता है, राइट, तो उसका डेटा हमें मिलता है ना. तो उस डेटा, वो डेटा हमें कैसे मिलता है, फिर हम उस डेटा को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, हम अपना जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है या जो भी क्लाउड हम यूज कर रहे हैं, है ना, उसके डेटा को हम अपने क्लाउड में कैसे इंटीग्रेट करते हैं, फिर उससे हम कैसे उसको स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं, उसका पूरा जो है हम वैलिडेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ वैलिडेशन चेक्स लगते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, राइट. जो वैलिडेशन चेक है, हर एक वैलिडेशन चेक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, और अगर उनमें से कोई भी एक मिस हो गया तो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, है ना. अगर हम भूल जाते हैं तो हम उसे फिर कैसे रिट्रीव कर सकते हैं. एंड फाइनली जब सारा वैलिडेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसमें हम कैसे लॉजिक लगाएंगे, उस डेटा को हम कैसे सिक्योर करते हैं, देन उसको हम जो क्लाइंट को वापस उससे इंसाइट्स चाहिए वो इंसाइट्स हम कैसे देते हैं, किस फॉर्मेट में देते हैं, है ना. तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट में आएंगी. देन आपका रहेगा रेज्यूमे प्रिपरेशन. तो रेज्यूमे प्रिपरेशन आजकल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर आपका रेज्यूमे नहीं है तो सबसे पहले आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है, राइट. क्योंकि हम भी जब कोई रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वेदर दैट रेज्यूमे इज अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और नॉट. एंड अगर आपका 10 पेज का रेज्यूमे है ना तो दैट इज नॉट अप टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, और कोई भी इंटरव्यूअर इतना 10 पेज का रेज्यूमे नहीं पढ़ता, है ना. तो एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड द रेज्यूमे शुड बी of either 1 page or max of 2 pages, not more than that. तो आपको एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है. तो उसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे, आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो प्रोजेक्ट्स हम आपको बताएंगे, है ना, एंड जो आपने अजोर पढ़ा है हमसे, जो आप पढ़ोगे उसको आप कैसे अपने रिज्यूम में डालोगे. एंड कुछ कीवर्ड्स होते हैं रिज्यूमे में. तो जब आप कोई भी जब एचआर नौकरी में देखते हैं या लिंक्डइन में देखते हैं या फाउंडेड में देखते हैं, राइट, तो उसमें वो कुछ कीवर्ड सर्च करते हैं. तो अगर आपका रेज्यूमे उस कीवर्ड के अंदर फॉल कर रहा है तो देयर आर ह्यूज चांसेस ऑफ योर रेज्यूम टू गेट शॉर्टलिस्टेड, राइट. तो उसको भी हम आपको हेल्प करेंगे कि वो कीवर्ड्स कैसे डालना है, आपका जो नौकरी में प्रोफाइल है वो प्रोफाइल कैसी दिखनी चाहिए, हाउ इट हैज टू बी इम्प्रेसिव,
योर रिज्यूमे एंड योर प्रोफाइल हैज टू बी इम्प्रेसिव कि वो फट से शॉर्टलिस्ट तो हो ही जाए, राइट? Then it's 100% job assistance. Yes, we are going to provide you with 100% job assistance. So in the last tenure of the course, we are going to help you with mentorship programs. We are going to guide you with each and everything. We are going to take your one-on-one mock test. Then we are going to provide you with few assignments, right? You have to complete the assignments as well. And आपको कुछ भी doubt होता है, we are going to make you industry ready, right? ताकि आपका कभी भी कोई भी इंटरव्यू हो and you are going to get with full confidence, है ना? कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है व्हेन यू गो विद फॉर द इंटरव्यूज, बिकॉज वी हैव ऑल्सो सीन पीपल कि उनको आता सब कुछ है लेकिन बोल नहीं पाते क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है बोलने का, बता ही नहीं पाते। तो उसमें ये लगता है कि यार बंदे ने रिज्यूमे में तो लिख दिया लेकिन आता कुछ नहीं है, right? So we don't want you to come in that situation. That's why we are going to take one-on-one mock test with everyone. We are going to provide you with the assignments. But it's a request from our side to everyone कि हम जो भी assignments देंगे, please take it seriously. And every day, at least 1 hour you have to spare to practice it. राइट? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वो चीजें नहीं आएंगी, है ना? क्योंकि फिर यही होता है, हम आगे पढ़ते जाते हैं और हम पीछे का भूलते जाते हैं। तो ये चीज हमें नहीं करनी है, इसलिए हमें एटलीस्ट 1 hour स्पेयर करना है डेली और प्रैक्टिस करनी है। हम बैठे हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप हमें कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, वी आर देयर टू हेल्प यू एनी टाइम, राइट? एंड वीक में एक क्लासेस हम सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन के लिए ही रखेंगे, डाउट सेशन हफ्ते में एक दिन का रहेगा। तो एज पर एवरीबडीज अवेबिलिटी, चाहे आप वो 1 hour की बोलो मैं 1 hour की कर दूंगी, आप 2 hours, आप लोगों को लगता है कि नहीं यार 1 hour में नहीं हो पाएगा, हमें 2 घंटे चाहिए तो हम 2 घंटे में करेंगे, राइट? एंड इसमें जितने भी आपको काफी सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो हम आपको सारे प्लेटफॉर्म डाउनलोड भी कराएंगे, उसमें हेल्प भी कराएंगे। तो ये सारा आपका रहेगा। एंड जो ड्यूरेशन रहेगा क्लासेस का वो 1.5 hours करेगा, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, राइट? जिसमें से 1 hour अप्रोक्स और 1 hour 15 minutes जो है इट विल बी अ टीचिंग सेशन, और 1 hour will be a teaching session and the half an hour or 15 minutes will be a doubt session. तो उस क्लास में आप, मैंने जो भी पढ़ाया, आपको जो भी डाउट है आप तुरंत के तुरंत वहीं पे क्लियर कर सकते हो। अगर हमने कुछ डाउनलोड किया है आपको मैं हाफ एन आवर दूंगी ताकि आप वो प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर सको, कुछ भी एरर आ रहा है तो हम तुरंत तुरंत उसको रेक्टिफाई कर सकें, राइट? सो इट इज नॉट गोइंग टू बी पाइल्ड अप, है ना? क्योंकि अगर चीजें पाइल्ड अप होती जाती हैं देन यू आर यार कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। सो वी डोंट वांट यू टू टेक दैट एटीट्यूड कि कर लेंगे, वी वांट यू टू यार अभी करना है और मुझे ये करना है, राइट? सो इज एवरीबॉडी विथ मी इन दिस? यस, नो, मे Yes. बी? Yes. Yes, Yes. yes. यस, या, ओके। सो एनर्जी कहाँ है? ऐसे यस नहीं बोलते, यस विथ फुल एनर्जी, Yes, Tanya. राइट? Yes. या, दैट Yeah, साउंड्स Tanya. ग्रेट नाउ। या, दैट साउंड्स ग्रेट नाउ। ठीक है, तो या, now let's discuss each and every part in bit detail. So what is SQL syllabus? In SQL, as I said कि हम सबसे पहले SQL से शुरुआत करेंगे, right? तो SQL में the first part will be download and install of SQL server. तो SQL को प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसमें हम अपनी क्वेरीज लिखेंगे, राइट? एंड इसका जो आपको डेटा चाहिए प्रैक्टिस के लिए वो हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, आप वो डेटा को ही इस पे अपलोड करके उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? तो उसके लिए यू डोंट वरी अबाउट। देन वी हैव डेटा वेयरहाउस जिसमें कुछ स्कीमास होते हैं, स्टार एंड स्नोफ्लिक स्कीमा, देयर आर टू डिफरेंट डेटा वेयरहाउस। सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स, हम कल से जब इसको स्टार्ट करेंगे देन आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल फॉर श्योर, राइट? जिसने सीक्वल में काम किया है आई गेस दे नो व्हाट इज स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा एंड देयर डिफरेंस, सो दे कैन रिलेट टू द सिलेबस व्हिच आई एम गिविंग। एंड जिसको नहीं भी आता, जैसे मैंने बिगनिंग में भी बोला है, डोंट वरी, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू नो इन डिटेल्स एंड फ्रॉम स्क्रैच, राइट?
तो थर्ड है RDBMS. It's a relational database management system, and it also has two parts. It's OLTP and OLAP. Then we have some SQL commands. तो SQL में कुछ commands होते हैं. We discuss about that. Then we have some common commands. अगर कभी भी SQL के बारे में सुना होगा तो select तो सबने सुना ही होगा, है ना? तो that is a SQL command. Then we have execution sequence, right? तो हम SQL की क्वेरी हम जिस ऑर्डर में लिखते हैं ना, वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट नहीं होती है, राइट? और बहुत से लोग को ये कंफ्यूज होता है ना, कि हमने जो सीक्वेंस में क्वेरी लिख दी वो उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट भी होती है, नहीं। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, फिर चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप experienced हो, even if you have 15-16 years of experience person also, they are going to ask you this questions, right? We also ask this question कि यार SQL में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है, ये बताओ, है ना? तो दीज आर द इम्पोर्टेंट स्टफ। और जब हम ये पढ़ेंगे सिलेबस, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी विच यू कैन नोट डाउन एट दैट टाइम इटसेल्फ। एंड इसके कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन प्लेटफॉर्म से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उससे पूछे भी जाते हैं। एंड जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते जाएंगे, like if we'll go to this clause, seventh वाला clause operators and predicts, right? तो जब हम ये पढ़ेंगे तो clause कैसे यूज होते हैं, ऑपरेटर्स कैसे यूज होते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी टाइम मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी बताऊंगी, है ना? तो हम उसको भी ऑन द स्पॉट वो भी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। Then we have operators like in min, max, etc. Then we have subqueries. तो कुछ लोग इसको सब क्वेरीज कहते हैं, कुछ लोग इसको नेस्टेड क्वेरीज भी कहते हैं। तो सब क्वेरी का मतलब है एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी लिखना, राइट? तो इट्स नॉट एट ऑल कॉम्प्लेक्स, इट्स जस्ट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस एंड योर डेडिकेशन, राइट? Yeah, But anybody saying something? the emphasis in the course would be primarily on what are known as supervised learning approaches. And this course assumes that you have a basic background in probability theory, linear algebra, and optimization. Rajat, But are not you saying something? that you would require from these. Hello, Rajat? No, ma'am, I'm not saying Okay, no problem. something Fine. else. No problem. So I'll move further. Everybody is available. I'll move further. Yes, yes. Okay. Then we have some joins. Like, so joins को मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि this is an also an important topic. तो हमारे पास अगर दो दूसरे अलग अलग टेबल है ना, तो उन दोनों टेबल से अगर हमें कुछ कॉमन डेटा चाहिए तो उसके लिए हम जॉइंस यूज करते हैं। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है। देन वी हैव सेट ऑपरेटर्स, ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है, यूनियन, इंटरसेक्ट, यूनियन ऑल, है ना? ये हमने ए बी है उसका कॉमन वैल्यू निकालनी है, अगर कॉमन नहीं है तो उसको क्या करते हैं, राइट? कि हमने स्कूल में मैथ्स में पढ़ा था। तो ये सेम वैसा ही है, राइट? देन वी हैव सीटी, दैट इज कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? जब हम लंबी लंबी क्वेरीज लिखते हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखते हैं, तो उसमें ये यूज होता है। देन वी हैव विंडो फंक्शन, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि विंडो फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। देन वी हैव pivot and unpivot, we have roll up, cube, grouping, etc. and we have views। ठीक है। तो व्यूज को भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। तो व्यूज मेनली होता है कि जब हमारे पास एक टेबल है ना, और उस टेबल से हमें कुछ स्पेसिफिक चीज चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी एक आउटपुट आ गया है, बट उस आउटपुट से भी हमें कुछ एक आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हम व्यू को यूज करते हैं। ठीक है। तो सीक्वल बहुत इजी है, जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं ना, इट्स अ कॉमन इंग्लिश, सीक्वल इतना इजी है। ठीक है। बट एज आई सेड, इट्स जस्ट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स, राइट? एनी क्वेश्चंस एनीवन, और विल मूव फर्दर? Ma'am, I have a question that as a data engineer,
Mm-hmm. what kind of clients do we encounter during our job? मतलब like what kind of job, what kind of data we have to retrieve and and structure and yeah, get insights. So what do there are companies or individuals do we have to deal with? So there are basically companies, right? They are all domains are available for Azure data engineers. Either you can work with pharmaceutical clients, you can work with e-commerce clients, you can work with finance clients, right? So there are multiple clients, and you don't have to work with an individual. There will be a client, and you will be given a dedicated role कि आपको ये काम करना है, right? And mainly your managers. हम्म रजा, आप कुछ पूछ रहे हो? Tanya, can I take it up? हाँ, sure, आशुतोष, please. So, Rajat, I would like to help in this. Like, we have multiple data providers. For example, in my company, we are into healthcare. So, we don't deal with single client right now. We have multiple data providers who provide us data over SharePoint. Some of them provide us over SharePoint. Some of them dump it to our data lake. Data lake is nothing but a storage over cloud Mm, Azure. Okay. So what we need to do is we need to make a connection to data lake or the SharePoint with linked services. हम वो that connection is established. Then what we do, we check the data in the format whatever it is given. Is it readable? If it is not, then we convert it via Azure Data Factory, right? mm, Then we convert into readable form because in SQL Server, whenever the work is done, then whenever the link service is connected, right, then we pull it to Databricks. Databricks is nothing but a add-on interface of PySpark, like where we handle big data, right? It's similar mhm, like Jupyter Notebook. In that, we write down queries. If it is in JSON format, for example, the data is into nested form. Whenever the data is extracted to from any website, it always comes into JSON format, right? There are multiple type of data sets which are there. Like there are Parquet file as well. There is JSON file, राइट? तो हम उसको डेटाब्रिक्स पे लेके जाते हैं। डेटाब्रिक्स पे हम उसको कनेक्ट करने के बाद लिंक सर्विसेज से उस डेटा को सॉर्ट करते हैं अकॉर्डिंगली जैसा हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट है। हम उसको सॉर्ट करने के बाद जब हमारा डेटा एक अच्छे फॉर्मेट में आ जाता है आगे हैंड ओवर करने के लिए, तब हम उसे सीक्वल सर्वर के अंदर डाल देते हैं। to get it organized. हाँ, अनऑर्गेनाइज्ड भी आता है। अगर डेटा Mm, अनऑर्गेनाइज्ड आया है तो हमारा यही अप्रोच होगा कि हम उसे कनेक्ट करेंगे, लिंक सर्विसेज बनाएंगे, हम डेटाब्रिक्स में mm, उसे ठीक करेंगे, हम उसे okay, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसको सीक्वल सर्वर में डालेंगे। बिकॉज सीक्वल okay. सर्वर में मोस्ट ज्यादा स्ट्रक्चर्ड डेटा ही जाता है, राइट? Mhm, इन दैट वी हैव अ mhm, कॉलमनर स्ट्रक्चर सीक्वल सर्वर में, राइट? बट इन okay, डेटा लेक वी कैन हैव एनी स्ट्रक्चर, okay. राइट? तो वो कनेक्शन बनाना, वो लिंक सर्विसेज, अभी आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, इसलिए हम लोग इसे जितना इजी हो सकता है ना उतना इजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज बहुत लोग नॉन टेक से भी हैं, वी कैन गेट इट मोर कॉम्प्लेक्स एज वेल, बट आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज इजियर कि सब कनेक्ट कर पाए। फिर धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव ऑन करेंगे आगे करिकुलम में। Okay. अगर कोई भी डाउट है तो मतलब यू कैन आस्क एनी टाइम, नो इश्यूज। तो अभी आपका डाउट क्लियर हुआ? Yes, yes. Okay. हाँ, थैंक यू। Yes. Yeah, thank you, आशुतोष and रजत. तो जैसे आशुतोष ने रजत एक्सप्लेन किया कि हम इसको बहुत ही इजी वे में टेक ओवर करेंगे एंड धीरे धीरे विल मूव इट। एंड जो अजोर डेटा इंजीनियर्स डेटा को बनाते हैं, राइट, या जो भी मीनिंगफुल इंसाइट्स यूज करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डेटा साइंटिस्ट नहीं यूज करते, वो मल्टीपल स्ट्रीम्स पे जाता है, राइट? जो बिजनेस ओनर्स हैं वो उससे इंसाइट्स लेते हैं, डेटा साइंटिस्ट उससे इंसाइट्स लेते हैं। अगर आपने Mm, देखा होगा, आप किसी वेबसाइट्स पे जाते हो, है ना, तो उसमें आपको चार्ट्स दिखते हैं, बार ग्राफ दिखते हैं, कुछ चार्ट्स आपको बने हुए दिखते हैं। तो वो सब एक पावर बीआई डेवलपर्स बनाते हैं। तो अजूर डेटा इंजीनियर्स पूरा डेटा को सॉर्ट करके मीनिंगफुल इंसाइट में डाल के फिर आगे जिसको भी रिक्वायर्ड है उनको प्रोवाइड करते हैं, एंड देन दे विल टेक इट फर्दर, है ना?
तो वो मल्टीपल टीम्स को एसोसिएटेड रहते हैं एंड इट्स टोटली डिपेंड कि आप उसमें काम कर रहे हो. समटाइम्स द अजोर डेटा इंजीनियर का मेन फोकस जो रहता है वो अजोर डेटा लेक पे होता है, किसी का अजोर डेटा फैक्ट्री पे होता है, किसी का अजोर डेटा ब्रिक्स पे होता है. तो इट डिपेंड्स, आपको सारे टूल्स यूज करते हो आप, लेकिन कई बार स्पेसिफिक टूल्स पे आप ज्यादा काम करते हो, मोर ऑफ योर वर्क, राइट? Yes. So we'll move further. Yes. Okay. Okay. The next we have Python syllabus. So in Python, we will go with the fundamentals of Python. कि Python क्या है, what is the requirement of Python. Then Python में क्या क्या operators है, flow control and IO of Python, the data types in Python. तो क्या क्या डेटा है, उसके क्या टाइप्स हैं. देन मॉड्यूल्स और पैकेजेस, तो क्या मॉड्यूल्स एंड क्या पैकेजेस हैं पाइथन में. देन देयर आर सम एक्सेप्शंस, लाइक कई बार डेटा ऐसे आ जाता है कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड डेटा है ना, पूरा ही ऊपर नीचे डेटा है, तो उसको हैंडल कैसे करते हैं, तो दैट इज नोन एज एक्सेप्शनल हैंडलिंग. तो वो कैसे की जाती है पाइथन में, वो इसमें बताएंगे. देन फंक्शंस, फंक्शंस में भी बहुत सारे फंक्शंस है. कई बार आपको कंडीशंस यूज करनी पड़ती है कि इफ कंडीशन हो गई आपकी, एल्स कंडीशन हो गई, बहुत सारी कंडीशंस हमें इसमें यूज. And आई गेस आशुतोष, सो पाइथन जो है वो आपको आशुतोष ट्रेन करेंगे. सो आई गेस आई कैन हैंड इट ओवर टू आशुतोष टू एक्सप्लेन यू इन अ डिटेल sure. वे. Ashutosh, can you So please pick it up? yeah. So I'll start it from like fundamentals. So in fundamentals, we'll be talking about variables. Sorry. Uh, so variables, storing variables, and all the basic stuff about Python. Then we talk about operators, adding, multiplication, all the mathematical operations which can be used. Equal to, double equal, right? Flow control is like if else statement, and constructors, input output. Data types are something like list, tuples, and dictionary, nested dictionary, frozen sets, right? And modules and packages, we have different modules and packages like in NumPy, pandas, right? Exception handling basically comes up with errors. So in data engineering there is a great saying कि error आपका कोड की वजह से कम बट डेटा की वजह से ज्यादा आता है, क्योंकि समटाइम डेटा इज सो कॉम्प्लेक्स कि उसमें एक्सेप्शंस बहुत जरूरी है, अदरवाइज एवरी टाइम द डेटा विल बी चेंजिंग, क्योंकि एंटायर प्रोसेस इज ऑटोमेटेड. जब भी डेटा चेंज होता रहेगा आपका एरर रेज होता रहेगा, पूरी पाइपलाइन फट जाएगी. तो यू हैव टू रेज मोर एक्सेप्शंस, राइट? एंड देन देयर आर फंक्शंस लाइक लैम्डा फंक्शंस हो गया, नॉर्मल यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो गए, and its features. Regular expression is nothing but like text, combination of text ho gaya, symbols ho gaye. Then we can create a logging script from Python. Oops is object oriented programming, right? In inheritance, encapsulation, abstraction, all like that. When you define a function or you move into development or automation, you use all these concepts, right? Then multi-threading and file handling, everything. And in data analysis, we have some add-ons for you guys. Like in data analysis, we'll be teaching like NumPy, Pandas, Matplotlib, Seabond libraries. So with which like basically is a starter of data. Like whenever you check the data science curriculum, it is like initial requirement where you basically do the entire EDA, like exploratory data analysis of a data. You can explore each and everything with those libraries, and which are very very helpful. So we'll be teaching each and everything whatever is required in data engineering, it is all into it. And with every step by step we'll be giving you assignments. Post assignments, we suggest you guys to create an account over HackerRank, do at least 5 problems of each SQL and Python daily, because programming is something which needs practice, back to back practice, and it will make you more precise and more like you can say experienced. Even 1 year guy, right, with more practice can beat 7 year guy.
If he has more hands on, it is everything about hands on. How much you practice. If you have time, practice more and more questions. Skill matters, basically. More than experience, skill matters. How good are you at your skill? And we'll be teaching you each and everything whatever is required in this data engineering for Python. And these Python script can also be used with PySpark, which is in Databricks. So yeah, that's it for Python. Thank you. Yeah, thank you, Ashutosh. Then we'll move further with any doubts in Python, anyone? No, Oh, okay. Then let's move further. Yeah. So what we have in Azure, so we have ETL concept. ETL, as I have told you, it's extract, transform and load, है ना? तो जब हमें डेटा मिलता है तो हम उससे कहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, मतलब हम उसे कहाँ से निकाल के लेके आते हैं वो डेटा, फिर हमें जो वो चाहिए होता है जिस फॉर्मेट में, हम उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या लॉजिक्स हम यूज करते हैं, क्या वैलिडेशंस यूज करते हैं, फॉर्मूलाज यूज करते हैं, है ना, सीक्वल, पाइथन, जो भी हमें यूज करना होता है हम उसको कैसे यूज करते हैं, एंड एट द एंड लोड, एल इट्स फॉर लोड। फिर हम जो डेस्टिनेशन है जहाँ हमें उसे लोड करना है, चाहे वो हमारी क्लाइंट की डेस्टिनेशन हो या हमारी इंटरनल टीम की डेस्टिनेशन हो, तो उस डेस्टिनेशन में हम उसे जाके लोड करते हैं, है ना। तो इसका एक पूरा ईटीएल कॉन्सेप्ट बनता है, इसको हम आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो ये प्रोसेस पूरा कैसे होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से इसमें टूल्स यूज होते हैं, इसमें जो कीवर्ड्स यूज होते हैं वो कीवर्ड्स, एक एक कीवर्ड्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देन वी हैव स्पार्क, जैसे आशुतोष ने बताया कि स्पार्क मेनली डेटाब्रिक्स में होता है, और ये एक लैंग्वेज है जिससे हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं जो डेटाब्रिक्स में। और ये इसमें भी हम पूरा अजोर का ही काम होता है, राइट। जो हमारी वैलिडेशंस होती हैं बेसिकली, है ना, हमारे जो डेटा आती है, डेटा की जो हमारी वैलिडेशंस है, जो हमारे चेक्स लगते हैं कि डेटा हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में आया है कि नहीं आया है। तो वैलिडेशन क्यों जरूरी होती है? कई बार क्या होता है कि जब क्लाइंट हमें डेटा भेजता है ना, तो जो उसने पहला हमें टेबल भेजा होता है उसमें मान लो कि नाम अलग अलग होता है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। तो वो दो अलग अलग कॉलम उन्होंने क्रिएट किया है, फर्स्ट नेम के लिए और लास्ट नेम के लिए, ठीक। तो पहली जो हमें फाइल आई उन्होंने वैसे भेज दी, तो हमने पहली फाइल उस हिसाब से हमने प्रोसेस पे लगा दी। नेक्स्ट जब उन्होंने फाइल भेजी हमें, तो उन्होंने दोनों नाम को एक ही कॉलम कर दिया, नेम का सिंगल कॉलम कर दिया, है ना। तो उन्होंने सेपरेट नहीं किया। अब क्या होगा, जब हम उसको रन करेंगे उस फाइल को, तो वहां पे तो वो मिसमैच होगा, कॉलम मिसमैच हो जाएगी, क्योंकि अब एक कॉलम तो हमारे लिए कम हो गया, है ना। तो उस केस में हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, हम उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, है ना, उसके लिए हम क्या लॉजिक्स बिल्ड करते हैं, तो ये सारी चीजें वैलिडेशन में जाती हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया है, और भी बहुत तरीके के एग्जांपल्स इसमें होते हैं, लाइक इफ आई टेल यू अबाउट एनी मेडिकल टर्म, है ना। तो कोई एक एक्स वाई जी पेशेंट है, अब वो हॉस्पिटल में गया, है ना। तो वहां पे जब वो फॉर्म भरते हैं तो उसमें उनका डेट ऑफ बर्थ भी लिखाता है और डेट ऑफ एडमिशन भी लिखाती है ना। तो कई बार क्या होता है वो स्वैप हो जाता है, तो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एडमिशन वो स्वैप हो गया, तो अब जब बंदा पैदा ही नहीं हुआ तो वो एडमिट कैसे हो सकता है, राइट। तो ऐसे चेक्स भी लगते हैं कि जो उनकी डेट ऑफ एडमिट इन हॉस्पिटल है वो उनके डेट ऑफ बर्थ से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, मतलब ईयर ज्यादा होना चाहिए। अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 92 का है तो उनकी डेट ऑफ एडमिट पोस्ट 92 की ही कभी होगी, उससे पहले की तो नहीं हो सकती, करेक्ट। तो ये सारे कुछ चेक्स होते हैं जो हमें लगाने पड़ते हैं, दे आर वेरी नेसेसरी, नहीं तो जो हमारा डेटा है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और सब मीनिंगफुल इनसाइट्स नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अजोर डेटाब्रिक्स में करते हैं। देन वी हैव अजोर डेटा लेक। अजोर डेटा लेक बेसिकली होता है एक स्टोरेज अकाउंट, अजोर का अपना स्टोरेज है जिसमें हम सारा डेटा जो है वो स्टोर करते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि हम जो सॉर्टेड डेटा है वही स्टोर करते हैं, इसमें सारे तरीके के डेटा स्टोर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड,
ठीक है, जो हमने वैलिडेट किया है वो, अगर कुछ वैलिडेशन फेल हो गई है तो वो, है ना। तो इसमें हर अलग अलग फोल्डर्स बनते हैं और सारे तरीके के डेटा अपने अपने फोल्डर्स में जाके सेव होते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है ना, इसको हम कैसे करते हैं। अज़ोर को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर उसको हम कैसे यूज करेंगे हर एक चीज को। सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम अज़ोर डेटा लेक यूज करते हैं। तो डेटा लेक में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेजेस हैं, ठीक है। तो उसमें आप ब्लॉब स्टोरेज है, आपका ADLS Gen 2 है, तो हम कौन सा यूज करते हैं, हम उसको क्यों यूज करते हैं, उसका क्या रीजन है, करेक्ट, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। And for each and every scenario we uses different storage account. So for which scenario which storage account is more suitable and why, so that is also one of the question that most of the interviewers do ask to check your knowledge, right. Then we have Azure Data Factory. So as we said that we have to create some pipelines. पाइपलाइंस को अगर मैं इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो मुझे दूध लेने जाना है शॉप पे, राइट। तो मेरा काम क्या है, दुकान से दूध लेकर आना, है ना। उसके लिए मैंने क्या क्या प्रोसेस किया, मैं घर से निकली, मैं दुकान पे गई, दुकान वाले को मैंने बोला मुझे दूध दो, उसने मुझे दूध दिया, मैं दूध लेके घर वापस आई, करेक्ट। तो अब मैं दूध लेने कैसे गई, मैं पैदल गई कि मैं गाड़ी से गई, तो ये सब जो एक मेरा काम हुआ है ना, घर से जाना शॉप तक, शॉप से दूध लेके वापस आना। तो मेरा स्टार्ट पॉइंट क्या था, मेरा घर, मेरा एंड पॉइंट भी था मेरा घर, और मेरा टास्क क्या था, दूध लेके आना, करेक्ट। तो ये चीज जो है वो एक पाइपलाइन फॉर्मेट में बनेगी, है ना। यही चीज हम करते हैं अज़ोर डेटा फैक्ट्री में। तो हम एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं कि हमारा डेटा कहाँ पे है, उस डेटा से हमें क्या इंसाइट चाहिए, अगर हमें कुछ कंडीशनिंग लगानी है, कुछ फॉर्मेट लगाना है उसमें, तो हमें क्या करना है, और उस डेटा से हमें क्या इंसाइट चाहिए, और वो इंसाइट हमारा कहाँ स्टोर होना चाहिए, राइट। तो ये काम जो है वो हम एक पाइपलाइन के थ्रू यूज करते हैं, हम एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं अपने काम की, और वो हम अज़ोर डेटा फैक्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। देन डिप्लॉयमेंट क्या होता है, डिप्लॉयमेंट होता है कि जो हम काम कर रहे हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं सेव होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आज मैंने कोई एक कोड लिख दिया या मैंने एक पाइपलाइन बना दी, ठीक है, तो मेरी टीम में उस पाइपलाइन को एक्सेस करने का, मेरी टीम में 5 लोग हैं, हम पांचों के पास एक्सेस है, ठीक है। तो मैंने अपनी पाइपलाइन बना दी, मैंने अपनी पाइपलाइन सेव करके रख दी कि ठीक है अभी तो मैंने सेव कर दिया, मेरे को अभी इसको रन नहीं करना, मुझे बाद पे रन करना है, या रन करना है तो मैंने रन भी कर दिया। अब क्या होगा, मान लो मेरी जगह ऐसे विप्लव आ गए, ठीक है। तो विप्लव ने क्या किया, जो पाइपलाइन मैंने क्रिएट की है उसी में जाके विप्लव ने चेंजेस कर दिया बाय मिस्टेक, अपनी पाइपलाइन समझ के उसने जाके उसमें चेंजेस कर दिए। अब क्या प्रॉब्लम होगी मेरे को, अगर मेरे को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ चेंजेस हुआ है, अगर मैं उसको ट्रैक ही नहीं कर पाऊंगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, करेक्ट। तो हम उसको ट्रैक कर सके कि पहले हमारी पाइपलाइन क्या बनी हुई थी, फिर उसमें क्या चेंजेस हुए, कब वो चेंजेस हुए, और हम अपनी पाइपलाइन को दोबारा से ठीक कर सकें, उसके लिए हम कुछ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, एंड उसी को हम डिप्लॉयमेंट के अंडर ले जाते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव अज़ोर की वॉल्ट सर्विसेज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली अगर कोई भी डेटा होगा तो डेटा सिक्योरिटी इज मस्ट, है ना। अगर कोई क्लाइंट हमारे साथ डेटा शेयर कर रहा है तो उसको होगा कि मेरा डेटा जो है वो सिक्योर्ड रहे। इसके लिए हम अज़ोर की वॉल्स यूज करते हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसेस होते हैं अज़ोर के। जरूरी नहीं है कि हमारे पास पूरा एक्सेस हो, या कई बार हमारे पास सिर्फ रीड एक्सेस होता है, कुछ डेटा के लिए हमारे पास रीड एंड राइट एक्सेस होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसेस होते हैं, है ना, फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो ये हमारा आता है अज़ोर की वॉल्ट में। देन वी हैव अज़ोर लॉजिक एप्स। तो लॉजिक एप्स में यही होता है कि अगर मान लो मेरी कोई पाइपलाइन मैं रन कर रही हूँ, राइट, सॉरी, if I'm running some pipeline, and by any point or at any point that pipelines get failed, right? So how can I come to know that my pipeline got failed? Right? There should be some indication or some notification to me that your pipeline has failed, so I can go back and I can retrieve
my pipeline, I can check it, I can rerun it or resolve it, right? So for that purpose, we use Azure Logic App, right? Now one more thing, हमने बहुत बार मेंशन कर दिया इन दिस कंप्लीट सेशन कि हमें क्लाइंट से डेटा आता है, हमें क्लाइंट से डेटा आता है ना? तो क्लाइंट से डेटा हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में आता है, ठीक है? कोई हमें एक्सेल में भेजता है, कोई हमें सीएसवी में भेजता है, तो सब हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में भेजते हैं। एंड उसकी भी जो टेन्योरिटी है वो डिपेंड करती है कि क्लाइंट हमें डेटा कब भेज रहा है, ठीक है? तो कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं वो अपना डेटा वीकली भेजते हैं, कुछ क्लाइंट्स हमें मंथली डेटा भेजते हैं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका कुछ स्पेसिफिक डेटा है जो उन्हें हर डे टू डे अपडेट चाहिए होती है उस पे, तो वो हमें डेली भी प्रोवाइड करते हैं, है ना? तो जो हम अपनी पाइपलाइंस क्रिएट करते हैं, जो हम अपने लॉजिक्स क्रिएट करते हैं, वो हम उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं कि ये लॉजिक जो है वो हफ्ते में एक दिन चलना है या महीने में एक दिन चलना है या रोज चलना है, ठीक है? तो हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग पाइपलाइंस क्रिएट की जाती हैं, अलग अलग लॉजिक एप्स क्रिएट किए जाते हैं, डेटा लेक में अलग अलग स्टोरेज क्रिएट किया जाता है। तो हर एक क्लाइंट का सारा कुछ सेपरेट होता है, उनके कीवर्ड्स भी सेपरेट होते हैं, राइट? इस तरीके से अजोर काम करता है। तो एनी डाउट इन अजोर, एनीवन? No doubt. ओके। Yeah. Anyone wants to ask something? No doubts, so I'll move further. Yeah. So now let us talk about the duration of this particular course, right? तो इसकी ड्यूरेशन अभी जो हमने डिसाइड किया है, इट्स 4 months, राइट? एंड इट्स नॉट फिक्स्ड फॉर श्योर। अगर हमें लगता है कि नहीं वी हैव टू स्पेंड सम मोर टाइम ऑन एनी ऑफ द टॉपिक, तो इट कैन बी एक्सटेंडेड, राइट? सो फर्स्ट 10 days वी विल डेडिकेटेड टू सीक्वल। उसमें हम पूरा पढ़ेंगे जो मैंने आपको सिलेबस में दिखाया था कि सीक्वल का हर एक चीज विद इंस्टॉलेशन टू प्रैक्टिस, राइट? हर एक चीज हम प्रैक्टिस भी साथ साथ करते जाएंगे। एंड ये 10 days की हमारी क्लास है। हाँ, 2-4 दिन ऊपर नीचे जैसे मैंने आपको कहा कि हो सकता है, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि ड्यू टू सम फेस्टिव, क्योंकि मार्च में फेस्टिवल्स आ रहे हैं, है ना? तो हो सकता है कुछ वीकेंड में कोई फेस्टिवल पड़ जाए एंड यू पीपल आर नॉट अवेलेबल, सो वी हैव टू पोस्टपोन आवर क्लासेस। इन दैट सिचुएशंस ये एक्सटेंड हो सकती है ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, ठीक है? Then we have from day 11 to day 25, that is 15 days dedicated will be to Python. तो आपको आशुतोष ने जितना कुछ बताया है जो हम आपको पाइथन में शेयर करने वाले हैं, तो वो सारा कुछ आपको पाइथन में बताया जाएगा विद प्रैक्टिस अगेन। देन वी हैव अजोर फ्रॉम नेक्स्ट 15 days वी हैव अजोर। तो अभी जितना मैंने आपको अजोर में एक्सप्लेन किया उसको हम कंप्लीट करेंगे अगेन विद डेडिकेटेड प्रैक्टिस। एंड लास्ट का जो हमारे 8 days होंगे, राइट? सो आई कैन से लास्ट 2 or 3 weeks वो हमारा पूरा प्रोजेक्ट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन में रहेगा। इसी में हम आपका रिज्यूम भी बना के देंगे, ठीक है? सो वी हैव सम एचआरस विद अस ऑन बोर्डेड, राइट? तो वो एचआरस आपको हेल्प करेंगे कि आपको एक इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, हाउ टू गो विद एन इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट। जो मैंने कीवर्ड्स मेंशन किए थे, राइट, कि कुछ कीवर्ड्स डालने हैं, तो वो आपके कीवर्ड्स कैसे कैसे डालेंगे, तो ये सब भी है। एंड देयर इज अ रिक्वेस्ट कि ईदर इट्स नॉट द इमरजेंसी थिंग, बट आप सब अपनी एक प्रोफेशनल फोटो जरूर खिंचा के रखना, बिकॉज एज पर दी गोइंग ट्रेंड रिज्यूमे में आपकी एक प्रोफेशनल फोटो अगर आप लगाते हैं, दैट गिव्स बूस्ट टू योर रिज्यूमे। क्योंकि कीवर्ड्स में कहीं ना कहीं एक कीवर्ड ये भी होता है कि जिसकी फोटो लगी है, बिकॉज अगर आप अपने रेज्यूमे में अपना फोटो लगा रहे हैं, है ना, तो दैट शोज दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, है ना? यू आर अ, दैट्स व्हाई आपने अपने रेज्यूमे में अपनी फोटो लगाई है, ठीक है? तो जो भी कॉन्फिडेंट पर्सन होता है उसको लोग ज्यादा लेना पसंद करते हैं, दैट ओके ही इज अ कॉन्फिडेंट पर्सन।
right? And again, ये सारा confidence, we are there to boost you. So it's like टू वेज थिंग है ना. तो हम आपको पूरा विल गिव आर 100% डेडिकेशन टू टीच यू टू मेक यू a successful data engineer, a successful Azure data engineer, and will surely help you to get your dreams job, whatever you are looking for, and irrespective of your domain, irrespective where you are from tech or you're non from non-tech, irrespective of anything, बिल्कुल हम आपकी हेल्प करेंगे. राइट. एंड यू हैव एग्जाम्पल ऑफ विकास. तो विकास हमारे साथ पहले भी लास्ट उसमें भी विकास हमारे साथ जुड़े थे, बट अभी हमने कुछ और इम्प्रोवाइज किया है हमारे कोर्स पे. राइट. सो ही वांट्स टू लर्न दैट एज वेल. सो ही अगेन got associated with us, he trusted us. Right. So you have that example कि हाँ उन्होंने improve किया अपनी job पे, and he wants to improve more and more and more. Right. So we are always there for you, and I can say again that you are at right place on right time, taking a right decision. Right. So any questions, or Ashutosh, would you like to add points from your side? Yes, yes. So I would request you guys, it's a two-way thing as Tanya mentioned. So we just request your dedication, your consistency, your efforts and hard work, and I can assure you that it will pay you off. SQL is not that complicated. It's very easy. Python is very easy. If you follow the step by step approach, which we are going to teach you, you can crack a good package, good promotion, or if you don't have a job, you can get a good job with handsome salary. So just stay confident, follow the step by step approach, and do practice. See, first thing, whenever you reach halfway of your SQL course, or at least like 4 5 session, log into Hacker Rank, Hacker Earth, whichever coding platform you like, Lead Code. Start doing practice. Every day you need to solve at least 3 4 question or maximum 5 to 10 questions for SQL. And when we'll be starting Python, try to solve as maximum questions you can. It will increase your confidence, and the same question will be coming into your interviews. It's not that complicated thing which is getting done in 10 days. You can imagine their complexity. Interviewer doesn't ask that complex question because entire thing is taught on job, because of the different type of projects, right? They basically check the basic understanding, course understanding of a person, right? And if you'll practice at least 50 to 100 questions all together at the end of 4 months for both, it can be done, guys. 150 question for each SQL and 50 question for Python is not that much. You have 4 months with you guys. You can practice this. Just you have to log in for 1 hour. Excuse me. Just log in for 1 hour, do the practice early in the morning, whenever you get time, either in evening or morning. Just do the practice, and you're all set for the better growth. And as your thing, we have just given you an overview of what exactly the pictures and the path look like, right? We'll be teaching you in detail. We'll be exploring each and every application and add-on services whichever is there in Azure for data engineer specifically. So it will be 70 to 80% more hands-on, which will be doing practical approach, and you have ample amount of time to practice it. Will give you enough data to practice SQL, will give you enough coding assignments to practice Python from our end. And even at the end of the course, we'll be providing you 50 questions to practice, 50 more question on Python. And even as your assignments, the projects which we'll be teaching, it's like live industry standard projects, and will be helping you with the questions what a interviewer can expect you to answer from those projects, right? Basically what happens is, whenever you go to an interview, he grills you down over the project. He basically asks questions on the projects itself, whatever you have mentioned, and will teach you each and everything about your projects. Whatever question can arise from an interview point of view,
So stay confident and follow the approach. You are all set for the better growth. That's all I can say. Thank you, Tanya. Yeah, thank you, Ashutosh. So, as Ashutosh mentioned, interviewers are going to grill you on your projects, right? So, an interview, I also take interview as I mentioned. So, there are two ways, right, to give the interview. First, it's like you give it to in the hands of interviewer that ठीक है interviewer को जो पूछना है पूछेगा, ठीक है? And the other is you let the interviewer ask the questions you want the interviewer to ask, ठीक है? तो आप अपने प्रोजेक्ट को आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो कि वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही घूमता रह जाता है ना? तो देयर आर दीज आर द टू वेज, राइट? और आप अपने प्रोजेक्ट को जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे इंटरव्यूअर का आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है? तो इस पार्ट में वी आर गोइंग टू ग्रिल यू और आई कैन से वी आर गोइंग टू गिव यू सच एन एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस कि आपसे इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ ले यू विल बी बैंग ऑन, राइट? Okay, so we are going to do it, and there is a bonus, as I have also earlier mentioned it. We have a trainer, Mr. Manoj. We are going to introduce him on Sunday or most probably next week, as due to some emergency, he is not available this week, right? So he is passed out from IIT Mumbai, and he is working in data itself. So he'll be our guest lecturer. एंड जब आपका मेंटर सेशन होगा एंड जो आपके इंटरव्यू सेशंस होंगे सो ही विल be the one person in the panel who's going to grill you, who's going to take your interviews, and he is also going to guide you with the industry की industry में क्या चल रहा है. He's somewhat going to guide you with data and few guest lectures also he's going to take for Azure, for Python, for SQL, right? तो वो भी हमारे PySpark, I साथ guess. इन्वॉल्व रहेंगे. Python and PySpark majorly. Yeah, right. And so we are planning to conduct the classes Friday, Saturday, and Sunday, and at evening 8 p.m. To 9:30 p.m. So is it everybody is okay with it, or you want me for Saturday, Sunday we should go for afternoon classes? What everybody suggests as per their availability, because I know Saturday, Sunday is a weekend and everybody has the plan at evening hours. So if you guys are okay with Saturday, Sunday, either 12 to 1:30 or 1 to 2:30 classes, we can schedule at that time. So guys, what you want? Ankur, any suggestions? The afternoon one is best, I think. For Saturday, Sunday, right? Yeah. Friday you can manage 8 p.m. because Friday is working day. Oh, that varies basically, but weekends, evenings are little bit occupied. Evenings, Yeah, I I do I understand. I got it. So for what we'll do now, Friday we'll set up 8 p.m. session, and Saturday, Sunday 12 p.m. session will be there, right? So everybody is okay with 12 p.m. or you want me to postpone to 1? Viplav? Viplav, Yeah, Bharat, yeah. Vikas, Rajat. 12 p.m. will be fine for Saturday and Sunday. Okay, Vikas, Yeah, I think Rajat, 12 will Bharat. be fine. Yeah, anywhere time in afternoon will be fine. Okay, fine, people. So the classes on Friday will be from 8 to 9:30, and on Saturday and Sunday it will be from 12 to 1:30, right? And one more thing, we are introducing our LMS. So within 10 to 15 days we are launching our LMS. तो जितनी भी recordings हैं आपको उसमें मिल जाएगी. All of you are going to get the access of that. ठीक है? तो please share, all of you have the WhatsApp number, company WhatsApp number. Please do share your email IDs in that. So once the LMS is in place, we can provide you the access of that. तो जितनी भी recordings हैं सारी recordings उसमें रहेंगी, प्लस जो डेटा जो भी हमको कोर्स का
करिकुलम है या सिलेबस है या जो भी स्टडी मटेरियल है, राइट, वो सारा स्टडी मटेरियल भी उसमें रहेगा। एंड जो प्रैक्टिस डेटा है, जैसे आशुतोष ने बोला, वो भी रहेगा। एंड आपके सारे असाइनमेंट्स भी उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इट विल बी अ वन प्लेटफॉर्म जिसमें आपको आपका सारा चीज मिल जाएगा। एंड इट इज गोइंग टू टेक एटलीस्ट 15 days of time. It's not going 7 days, I guess. Like next Okay. weekend tak it will be ready. Okay, thank you, Ashutosh, for the update. Right, and sorry for the wrong update that I gave. Right. So, so as he said, कि next weekend most probably we are planning. So whatever the classes will conduct, I guess there will be 6 classes by next weekend. तो ये सारी 6 classes जो रहेंगी ये हम उसमें डाल देंगे LMS में. And from tomorrow we are going to start with SQL. Right, so please be on time. And SQL में हम सबसे पहले सीक्वल के बारे में समझेंगे कि सीक्वल क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है ना। एंड उसको हम डाउनलोड करेंगे, उसमें हम डेटा इंटीग्रेट करेंगे। तो ये सारी चीजें हम कल करने वाले हैं, राइट। सो एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशन, एनीवन, anybody wants to say anything or something, please go ahead. Ma'am, I want to ask the hacker level questions which you mentioned earlier. So we have to practice those questions on daily basis. So on which platform are those available? Like on which So online it's platform? HackerRank. The platform name is HackerRank. Okay. या सो अगर जब आप हैकर रैंक में जाके ऑनबोर्ड करोगे अपने आप को, तो उसमें आपको सीक्वल भी मिलेगा, उसमें आपको पाइथन भी मिलेगा, प्लस Okay. सीक्वल दोनों के आपको 3 लेवल्स मिलेंगे, द बिगनर, द मिडिल एंड द एक्सपर्ट, राइट। तो जैसे जैसे हम Okay. आपको पढ़ाते जाएंगे, आप बिगनिंग से स्टार्ट करना एंड देन यू कैन मूव ऑन, राइट। सो Expert level. एंड जो मैं आपको कल सिखाऊंगी सीक्वल, उसमें हम माई सीक्वल डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो माई सीक्वल में भी हम आपको डेटाबेस देंगे, आप माई सीक्वल में भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर जैसे ही हमारा लेक्चर्स खत्म होते जाएंगे, लाइक जो हमारा पहला वीक खत्म होगा, तो उस वीक में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं, उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। उनको वो आपका असाइनमेंट रहेगा, है ना। आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो जितना आपसे बन सके। Uh, on hacker, what you said? Let me write it down. हैकर So रैंक, which platform? Oh, We'll हैकर hacker. Okay, provide रैंक, it. We'll show it to you in the या next हम session. आपको ये कल शो okay, कर okay, okay, देंगे, okay. राइट, कोई बात नहीं। Tomorrow or Okay, the okay, later, okay. abhi, because initially you'll be starting with the Mhm. concept, basic, very basic, right? So I Yes, yes. think wait for 3-4 classes, then we'll introduce you to all the platforms, right? Sure, sir, sure. ओके, या एनीवन, एनीथिंग एल्स? एनीबॉडी? विप्लव, भरत, कौशल, विकास, एनीवन, एनी मोर क्वेश्चंस? I'm good, Tanya. ओके, या No questions. So we can wrap up, I guess. yeah, so you can note this, people, this is the email ID and this is the contact number. I guess everybody has the contact number, but still, if anybody doesn't have, this is the contact number and we are available on this number, right? So you can note it down. And in place of inquiry, you can write support@skillsize.com. That is also our tech support number. Like whenever you stuck to any problem statement or anything, you can either mail it to inquiry or support. We'll be sharing this with you guys. No worries. We'll push it to LMS with both the IDs. Yeah, that will be done. So if everybody is okay and no questions, I guess we can wind up today's class and we can meet tomorrow at 12. Yes. Yeah, sure. Sure. Yes, yes, Okay. sure. तो आपको लिंक्स जो है बाय टुनाइट और बाय अर्ली मॉर्निंग, जैसे आज ग्रुप में मैंने शेयर किया था, मैं आपको शेयर कर दूंगी।
Yes? Okay. Yeah, okay. Okay. Okay, fine. So I guess Okay. we can wrap up for today's call. Thank you, everyone. Thank you. Thank Thank you, Thank you. Tanya. Thank you, Thank you. Ashutosh. Thank Bye. you. Bye. Thank you, Tanya, ma'am. Thank you. Thank you, Ashutosh sir. Welcome. Oh, thank you. Thank you, everyone.